Innovation is power. The power to walk down never before known paths. The power to drive the transforming world today. The power to break the shackles of conventional and conquering it. We enable you to break the old. We are the Gujarat Technological University, the international innovative university. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. GTU, an intellectual destination for all those who seek not just to imbibe knowledge, but to excel in every endeavor. With more than 450 affiliated colleges in its fold, operating across 5 zones of the state, GTU is an accomplished educational administrative body. Its motto is to change and challenge conventional thinking, replacing it by innovative acumen. Today, Gujarat Technological University is the preferred destination for students from all over the Gujarat for technical education. GTU strive for innovation, research and startups which create job and entrepreneurship. Widening the vision to make this world a better place are distinctive disciplines like engineering, architecture, management, pharmacy and computer application are designed keeping in mind the transforming era of speed and technology. GTU is the first ever university in India that pioneered to inculcate design engineering in 6 semesters of undergraduate engineering program. Our vivid curriculum allows our students to cultivate a mindset of innovation, enhancing their skills. GTU offers 1 to 6 years programs in diploma, bachelor's, master's and doctorate. GTU has established 3 diverse postgraduate schools in academic year 2017-18, approved by AICTE and PCI. In the wake of increasing demand for cybersecurity, GTU has started PG courses to prepare competent manpower specializing in cybersecurity and mobile technology. These courses run under GTU School of Engineering and Technology with an intake of 30 students in each course. With an aim to contribute in the field of medicine by assuring quality and safety of drugs, vaccines and other biological products, GTU has established School of Pharmacy, offering M.Pharm in drug regulatory affairs. Our distinctive management programs infused with in-depth research like MPhil in business management gives a competitive edge to our students over their peers. To deliver quality education in the field of global business, GSMS started MBA in International Business, focusing to maximize the global opportunities for our students to perform exponentially in 7 international markets. We understand the ever-advancing technology and ever-changing time, and we adapt accordingly by offering distinguished online e-courses so that boundaries in time no longer hinder your aspirations. Excellence is to do a common thing in an uncommon way. GTU understands this belief and has taken every step towards making it a reality. Partnering with Bosch Rexroth India Limited, GTU envisions to actualize an industry institute partnership by making our students industry ready and to bridge the much needed technology gaps between industry and academics. The first ever Center of Excellence is currently functioning at Vishwakarma Government Engineering College, Chamkheda, Ahmedabad, equipped with the cutting-edge facilities. Global is the new local. Going the extra mile for our students is what we do.
we have a dedicated Department of International Relations to manage, expand and enhance international relations and activities of the university. We have collaborations with more than 30 foreign universities. DIR aims to provide an exposure to Indian students for international pedagogical environment in their academic specialization. International Experience Program (IEP) under GTU is one of the largest students' mobility program by the Technological Universities of India. More than 1,500 students have been benefited through IEP since its inception in 2011. Under IEP, GTU has collaborated with the universities of US, Canada, Germany and Bulgaria, offering a unique opportunity to the students and enhancing their skills with a global perspective. More than 350 students participate in summer program for 6 to 8 weeks every year. Foreign Student Cell is dedicatedly looking after the admission and administration of more than 500 international students studying under various full-time programs of GTU from across 43 countries around the globe. GTU ensures the best learning and living environment for all international students, along with the essence of a strong socio-cultural experience, making them truly a global citizen. Exploring and managing various joint academic programs with foreign universities. Joint events like conferences, workshops, seminars and research projects with foreign universities. Our international activities also focus on Winter School Program, where students from foreign universities visit GTU for short-term study tour. Our exemplary faculty members are the core of this staunch body. Imparting practical and theoretical knowledge in today's day and era is no easy task. More than 21,000 skilled and dedicated faculty members across all the colleges consistently drive themselves to steer ahead the responsibility of knowledge sharing. Innovation being in the core of every step we take. GTU has partnered with leading industries to encourage industry-academia knowledge exchange. GTU has more than 150 startup initiatives to encourage the innovative ideas of our students and give them the necessary pillars they crave for. Over 350 patents have been filed and 70+ patents have been published by our affiliated colleges. Integrated Training and Placement Cell conducts campus placements with many reputed firms to deliver industry-ready skilled manpower every year. The training received at GTU enables our students to be the most sought after in their chosen fields. To harness the entrepreneurial skills in the students, GTU Keepsake Welding Research and Skill Development Center, an initiative partnering with Keepsake Engineering Consultancy Private Limited, is being successfully run at LD College of Engineering in Ahmedabad. The center is equipped with workshops, with latest facilities for classrooms and actual hands-on training in the field of welding and non-destructive testing. GTU has been recognized for many achievements nationally and internationally. Acknowledged as the best university in internationalization. Ranked in top 60 for 3 consecutive years in one of the most prestigious robotics competition, RoboCon. GTU Robotics Club acquired Best Robotics Lab Setup Award by ICRA, award for the most upcoming university in Western India in 2018. Recognition in Limca Book of Records for celebrating the National Days of 50 countries as a part of the Global Country Study Report. Best Technical University Award at Indian Society for Technical Education for the year 2017. At GTU, we create the leaders of tomorrow with our innovative initiatives. Startup initiatives for the emerging talents. Research centers to provide new innovations and deep insights. Community and co-creation centers. Design and project-based learning system. A changing world where only one thing is constant, and that's innovation. Curating ideas that were never known. Building a new India of innovation and intellect. GTU.
the International Innovative University. Your place to move forward. When you arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive, to breathe, to think, to enjoy, and to love. Morning is an important time of the day because how you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. With this note, I, Brinda Pandya, welcome you, our esteemed and beloved speaker, Shri Bhupendra Chudasama Sir, our Education Minister, Gujarat State, Honorable Vice Chancellor Sir, Professor Dr. Naveen Sheth Sir, our respected Registrar Sir, Dr. K.N. Khair Sir, Director GIC, Dr. Sanjay Chauhan Sir, Hadia Sir, all participants from various states and all other. Now I request everyone to stand at your place for GTU song. समुचित ज्ञान समन्वय GTU समुचित ज्ञान समन्वय जन कल्याण का अडिग हिमालय गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय GTU समुचित ज्ञान समन्वय GTU समुचित ज्ञान समन्वय इनोवेशन की मशाल उठाए ज्ञान को चारों ओर फैलाए विश्वकर्मा की कृपा को पाकर विश्व फलक पर शान बढ़ाए नवीनता की खुशबू से जो भारत का कण कण महकाए ज्ञान पिपासु शिष्य वृंद की तपो साधना सफल बनाए GTU समुचित ज्ञान समन्वय GTU समुचित ज्ञान समन्वय अनुभवी शिक्षक कौशल बढ़ाएं परहित का ही पाठ पढ़ाएं अनुसंधान और ज्ञान का संगम भावी पीढ़ी उज्जवल बनाए आत्मनिर्भर युवा बने और शिक्षित विकसित राष्ट्र कहाए गौरव माता पिता का बढ़ाए हर मन में विश्वास जगाए GTU समुचित ज्ञान समन्वय GTU समुचित ज्ञान समन्वय विकास का यही क्रम दोहराए GTU को सर्वश्रेष्ठ बनाए हासिल करके उच्च सफलता शिक्षा जगत में क्रांति लाए सिद्धपुर सोमनाथ सूरत से कच्छ तलक फैला ज्ञानालय अपार संजोए संभावना गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय GTU समुचित ज्ञान समन्वय GTU समुचित ज्ञान समन्वय जन कल्याण का अडिग हिमालय गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय GTU समुचित ज्ञान समन्वय GTU समुचित ज्ञान समन्वय
I would like to welcome respected Registrar Sir of Gujarat Technological University, Dr. K.N. Kher Sir, for welcome address. Good morning. It gives me an immense pleasure and honor to welcome you all for taking your time to be a part of Toykathon 2021 organized by Ministry of Education, Government of India and hosted by Gujarat Technological University as a nodal center. I would like to welcome today's our chief guest and our Education Minister, Sri Bhupendra Singh Chudasama sir. I also would like to welcome our Honorable Vice Chancellor, Professor Naveen Seth sir, Director GIC Sanjay Chauhan sir, Coordinator Hadia sir, and who are virtually joined with us. Gujarat Technological University is a premier academic and research institution which has driven new ways of thinking since its inception 2017, established by Government of Gujarat. GTU is intellectual destination that draws inspired scholar to its campus, keeping GTU in the nexus of idea that challenges and change the world. GTU has been organizing various national hackathons since 2014, like HackPeep, Unigo, Code of Gujarat, Hackordinio, Marker Fast, etc. Also, GTU is hosting national largest hackathon, Smart India Hackathon, since 2017. In the past, the GTU has hosted SIH of 52 teams with 312 participants in 2020, 62 teams with 434 participants in 2019, 28 teams with 224 participants in 2018, and 48 teams with 384 participants in 2017. Ministry of Education has nominated 89 nodal centers to host Toykathon 2021 digital edition, and GTU is one of them. This time, GTU is hosting hackathon with 9 teams, 7 teams from Tamil Nadu and 2 teams from Gujarat with 36 participants, and in future, physically 21 team will join. I congratulate all of you and welcome you to GTU Nodal Center for participants in Toy Hackathon. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for enlightening us with the information about the legacy GTU has followed so far. Now I would request and welcome Director GIC, Dr. Sanjay Chauhan sir, for a brief background about GIC and Toy Hackathon 2021. Namaste, Suprabhatam. Honorable Education Minister Sri Bhupendra Singh Chudasama Sahib, Honorable Vice Chancellor Professor Naveen Seth Sir, our respected Registrar Dr. K.N. Kher, Professor Hadia, Coordinator DIC, Professor Raj and his team. In year 2010, the Gujarat Technological University Innovation Council is started, and since last 1 decade, it's performing well into the innovation and ecosystems. The aim of Innovation Council is to facilitate student startup by providing necessary facilities, organizing workshops, helping students to find relevant mentors and other activities weekly as well as monthly. GTU Innovation Council also conduct workshop
on training the professionals, flash ventures, social entrepreneurs, bootcamp, design thinking, and ideation workshop. The GTU Innovation Council has different wings like student support startup system, community innovation and co-creation centers, intellectual property rights facilitating centers, pre-incubation centers, incubation centers for startups, nodal institute for the startups, then NRDC facilitating centers as well as TISC, WIPO, Switzerland centers. Under the umbrella of GTU Innovation Council, we have the various funding supports from the state as well as the central governments. From the central governments, we have the Atal Incubation Center, which is supported by the Atal Innovation Mission, Niti Aayog. Design Innovation Center, supported by the Ministry of Education, Government of India. Recently, we have received a technology business incubator from the Department of Science and Technology, Government of India, as well as we are also initiating the approach by the state government, that is a student startup innovation policy by Ministry of Education, as well as Nodal Center for Startup, which is promoted by the Industrial Commissionerate. So this Toy Hackathon 2021 is an interministerial initiative by Ministry of Education's Innovation Cell, along with various other ministries of the centrals. In this Toy Hackathon, various themes are identified among Indian culture and history, knowledge of India and ethos, learning, education and schooling, social and human values, occupation and specific fields, environment, Divyang, fitness and sport, out of the box creative and logical thinking, and rediscovering traditional Indian toys. So by this toy hackathon, we can contribute towards our Indian traditions and learning approach. And in this toy hackathon, more than 30 teams are allocated to Gujarat Technological University as a nodal centers. And since 2014, university is conducting such kind of the hackathon to fostering the innovation and ecosystem. So on this occasion, I heartily welcome to all the participants, dignitaries on this 3 days toy hackathon. Welcome. Thank you. Thank you, sir. The more you learn, the more you want to learn. The more the world becomes more interesting to you. And discovering it becomes more fun. I would like to invite a person who believes in this statement thoroughly. Professor Dr. Naveen Sheth, sir, our Honorable Vice Chancellor, sir, Gujarat Technological University. I welcome you, sir. नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी चुड़ासमा जी, डायरेक्टर डॉक्टर संजय चौहान, कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अडिया, our registrar Dr. K.N. Kher, the team of Gujarat Technological University and the team from all over the India join in this virtual toy-kathon arranged by the central government. Our Honorable Prime Minister Narendra Bhai Modi ji on 12th May 2020 kickstart Atmanirbhar Bharat, and the same is taken by the youth all over the India. Such a large country, but previously it was the market for the other country. Our Prime Minister has given this Atmanirbhar Bharat mantra, that why our product developed by our youth and to be sent globally all over the world. And in different area, the innovation in either it may be agriculture, either it may be a startup area. It was kick-started by the different university, by the Government of India, by the Education Ministry throughout in all over the India.
Gujarat Technological University is arranging such program since the inception, and this program, particularly the Toykathon, that is for the toys, kid toys. There is a large market of the toys, about in $1 billion market, but we were nowhere in this market. By this Toykathon, there may be a number of industrialists. They come together by the idea which will be selected in this Toykathon, and there will be a creation of the different toys by the industrialists. Even by GTU, we have also have a meeting with the industrialists, and some industrialists, they have started already in Rajkot to manufacturing the different toys. So definitely in Atmanirbhar Bharat, this event will be the key event for the manufacturing of the toys in future. Our Prime Minister, Honorable Narendra Bhai, is always inspiring and motivating the young students. This Toykathon will be for the 3 days, and on 24th, the Honorable Prime Minister will directly address the team participating in this event. Thank you very much. Thank you, sir. Education connects you with the stories, theories, and accomplishments of faraway culture and generations. It offers you a body of knowledge greater than you can ever gain on your own in one lifetime. Without wasting a minute, I would like to welcome a firm believer of this, our beloved Education Minister, Shri Bhupendra Sarji, for your blessing speech. Prabhatam. Namaste, sir. श्रीमान नवीन भाई, भाई खैर, संजय भाई, अड़िया जी और जुड़े हुए सभी बहन और भाइयों, सबसे पहले मैं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। इतना अच्छा नए सब्जेक्ट को लेकर 3 दिन के लिए आयोजन किया है, और जीटीयू को मैं बधाई देता हूं, मैं अभिनंदन करता हूं। As being a nodal agency of this 3 days toy hackathon, पिछले 5 साल से हमने अप्रैल 1, 2, 3 सुबह 7:30 बजे 1 अप्रैल को ये हैकेथॉन शुरू होता था। Honorable Prime Minister always addressed all the country. हम भी साथ में गुजरात से जुड़ते थे। ये कोरोना के समय में आत्मनिर्भर का जो विचार प्राइम मिनिस्टर को आया कि सभी चीजें हम बाहर से मंगवाते हैं, और एक छोटा सा खिलौना भी ये देश के लिए ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ 72 years, तो हमें कुछ सोचना चाहिए। एक और बेरोजगारी है, एक और हमारे होनहार बच्चे हैं। मैं इसलिए होनहार बोलता हूं, आई हैव रेड समवेयर, आई नो गुजरात के बच्चे इन ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज, इन एनी फैकल्टी, एनी डिपार्टमेंट, दे आर ऑन टॉप। अमेरिका के
पहले 20 इंजीनियर लीजिए तो उसमें से 10-12 भारतीय और गुजराती होंगे। 50 डॉक्टर लीजिए, आर्किटेक्ट लीजिए, साइंटिस्ट लीजिए, तो गुजरात का ही बच्चा बाहर जा करके इतना अच्छा काम करता है, तो भविष्य में उनको ही यहाँ रोक करके, जो हम बार बार बोलते हैं ना, स्टार्टअप की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमें गिवर बनना है, सीकर नहीं बनना है। तो जो बच्चे बाहर जाते हैं उनको यहाँ ही रोक करके, दे कैन बी अ गुड गिवर, बाकी सीकर हो सकते हैं, मगर समाज में गिवर ही चाहिए, सीकर भी चाहिए। तो ये विचार 3-4 साल पहले प्राइम मिनिस्टर को आया, और जब हिसाब लगाया तो 7 लाख करोड़ का, वन कैन नॉट इमेजिन, 7 लाख करोड़ का बिजनेस, और पूरा का पूरा चाइना के पास। वैसे टेक्निकल जो भी चीजें हैं, वी हैव मोर देन चाइना। तो हम लीड क्यों ना करें। मैं प्राइम मिनिस्टर का आभार व्यक्त करता हूं कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, और आज उनका हम आयोजन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। वैसे लॉकडाउन में हमने, नवीन भाई और संजय भी सब जानते हैं कि लॉकडाउन में भी हमने वेबिनार के जरिए, बहुत वेबिनार में ये सब्जेक्ट भी लिया था। Nowadays we know more than other states. This is what I felt. तो मुझे लगता है कि गुजरात में, और हम सब जानते हैं कि ये सब स्टार्टअप के जरिए ही होने वाला है। तो स्टार्टअप में 18, 19, 20 में हम सब ने इतना अच्छा प्रयत्न किया, तो वी स्टूड फर्स्ट इन द कंट्री। इनमें जीटीयू का बहुत अहम हिस्सा भी है। हम सब ने मिलकर के, सभी यूनिवर्सिटी ने ये काम किया, तभी इतने बड़े देश में, continuous for 2 years, any state stands first in the country. तो मुझे लगता है कि एक टॉय हैकाथॉन में भी हम ज्यादा कर सकते हैं। इससे आत्मनिर्भर भारत की भी बात आगे बढ़ सकती है, और हमें फायदा ये होगा कि इसमें नवीन भाई ने बताया, संजय भाई ने भी बताया कि और सारे डिपार्टमेंट्स भी इसमें जुड़े हैं। मुझे लगता है कि इसमें हाँ है, एमएसएमई भी है। सबसे ज्यादा एजुकेशन, टेक्निकल डिपार्टमेंट और एमएसएमई को साथ में जुड़ना चाहिए। ये बड़े इंडस्ट्री का काम नहीं है, ये छोटी इंडस्ट्री का काम है। इसलिए हमें एमएसएमई के साथ ये सब्जेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे भी स्टेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एमएसएमई को बहुत सारा फायदा किया है, इतना अपॉर्चुनिटी दिया है कि यू स्टार्ट प्रोडक्शन, then you take any permission of land, of revenue, you take any permission within a 5 years time, you can start production. No other state has given so much facility to MSME. इसका भी लाभ मुझे लगता है कि हमें लेना चाहिए। मेरे मन में नवीन भाई कब से है कि हम, और मैंने सौरभ भाई को भी बोला है, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर को, कि एक पूरा सेशन
हम इसी सब्जेक्ट को लेकर क्यों न करें। इसमें आपका बहुत योगदान रहा है, मुझे मालूम है। खिलौने के माध्यम से without speaking any word we can pass the thought what we can or what we want to। ये खिलौना ऐसा माध्यम है कि इसमें प्रेम, शौर्य, बलिदान, हिस्ट्री, ये सब चीजें अलग अलग रूप से छोटे बड़े बड़े छोटे बच्चों के लिए, उससे बाल, तरुण, ये सब जो आयु है, ये सब के लिए खिलौना बहुत उपयोग में आता है। और मेरे मन में जो बात है कि अवर handicapped students, handicapped people who cannot walk, who cannot run, अपने वहां बैठ करके वो ये काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और भगवान कोई एक सेंस लेता है तो बाकी सेंस बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि ब्लाइंड मैन कैन रीड नाउ, कोई भी सेंस कुदरत ले लेता है तो फिर दूसरी सेंस बढ़ जाती है। तो बाकी हम स्वस्थ लोग तो कर सकते ही हैं ये खिलौना बनाने का काम, लेकिन ये हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको मद्देनजर रख करके हमें कुछ न कुछ आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण दूं। मैं स्कूलिंग भी मेरे पास है, पूरा का पूरा एजुकेशन। तो जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये टॉय की बात की है तो प्राइमरी के टीचर्स को मैंने बोला कि भैया मेरा अनुभव है, एज अ स्टूडेंट अनुभव है, एज अ टीचर अनुभव है, एज अ मिनिस्टर अनुभव है कि एक मैथमेटिक्स, एक इंग्लिश, एक साइंस मैं पढ़ाता हूं तो बच्चा समझ नहीं पाता है, और नवीन भैया, संजय भाई पढ़ाते हैं तो समझ में आता है। व्हाट इज द डिफरेंस? ये ढूंढ निकालो। एक ही दाखिला है, एक टीचर ने पढ़ाया तो स्टूडेंट वाज कंफ्यूज्ड। उसी दाखिला को कोई उदाहरण के रूप में, कोई कैलेंडर, कोई फ्रूट्स, कोई खिलौना ये बताया तो स्टूडेंट अंडरस्टूड, यस आई कैन नाउ। तो ये बात मैंने अपने प्राइमरी टीचर्स को बताई। यू वोंट बिलीव, they work very hard. They found out the solutions in English, in science, in mathematics and geography. तो 3 साल पहले चांगा में मैंने ऐसे इनोवेटिव टीचर्स को बुलाया। I had no time. I wanted to visit and inspire them, but when I looked them, I spared 3 hours there. इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा काम किया है। दूसरा ऐसा ही मैं उनको भी हैकाथॉन में बोलता हूँ, अहमदाबाद में किया, गांधीनगर में किया। तो ये हमारे टीचर्स में, हमारे बच्चों में, अपने दिमाग में है ही। हमारा काम दिमाग में से बाहर निकालना है। और इसका अनुभव भी मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरे स्टेट से चांगा में भी 400 टीचर्स आए थे, अहमदाबाद गांधीनगर में भी 500 से ज्यादा आए थे, और आगे बढ़ रहे हैं हम। फॉर योर काइंड नॉलेज ओनली कि सुधीर भाई जो हमारे जीएलएस के ट्रस्टी हैं, हाईकोर्ट के एडवोकेट भी हैं, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि साहब 3 तारीख को मैंने एक एमओयू का आयोजन किया है। फॉर योर काइंड नॉलेज, मारुति के साथ वो जुड़ रहे हैं। हम लॉकडाउन में बात कर रहा था मैं, आप सबको याद होगा लॉकडाउन में, कि व्हाट टाइप ऑफ इंजीनियर
The industry coming from Japan, Spain, US, nowadays वाइब्रेंट गुजरात के जरिए, आप याद कीजिए, मैंने बार बार बोला है वाइब्रेंट गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात. नाउ ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज आर रेडी टू इन्वेस्ट इन गुजरात. देखिए उनको क्या जरूरत है, कैसे इंजीनियर की जरूरत है, किस विषय में जरूरत है. हमारा तो सिलेबस है, हमारा इंजीनियर गोल्ड मेडलिस्ट भी जब जाता है तो उनको भी जापान में सीखना पड़ता है. क्यों ना वो वहां जाकर के सीखता है तो वो हम यहाँ क्यों नहीं सीख सकते हैं. तो पहला प्रयोग है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का. मैंने बोला कि मैं तो आऊंगा और सौरभ भाई को भी साथ में ले आऊंगा, हम दोनों जा रहे हैं. ये मैं बोलूंगा कि आपको भी वहां निमंत्रण दे, तो ये आगे बढ़ाना मेरे मन में है कि अभी ये कोरोना नहीं आया होता तो कल्पना के बाहर, बिकॉज आई एम अ विटनेस ऑफ वाइब्रेंट सिंस 3 to 17. इसलिए मैं कह सकता हूं कि गुजरात में जो है वो अन्य स्टेट में नहीं है. और स्टेट में वाइब्रेंट शुरू हुआ, बंद हो गया, शुरू हुआ, बंद हो गया. कंटिन्यूसली सिंस 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 कंटिन्यूस. और इन्वेस्टर बढ़ते गए. यदि हम उनकी जरूरत नहीं पूरी करेंगे तो हमारे यहाँ इंजीनियर बेकार रहेंगे और जापान का इंजीनियर यहाँ आकर गुजरात में काम करेगा. बहुत टाइम हो गया है. दिस इज माय इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. तो बार बार ऐसे मौके पर कोई ना कोई नए विचार रखने का मुझे मौका मिलता है. और आप सब भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, मैं देखता हूं. हम सबको मिलकर के, और आई हब अब शायद पूरा होने को है. हमने 62 करोड़ की लागत लगाई है. अगले कोरोना नहीं आया होता तो हम वहीं पर बैठ करके भी काम कर सकते थे. ठीक है, आज 11 बजे नवीन भी हम मिलते हैं विथ ऑनरेबल गवर्नर श्री. आपने ये बहुत अच्छा किया है. 3 दिन तक ये चलने वाला हमारा टॉय हैकाथॉन के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं. सबको मेरा नमस्कार. जय हिंद, जय जय गढ़ी गुजरात. Jai Jai Guru. Thank you, sir. Thank you for a blessing speech. Now I would request Dr. S.K. Haria, sir, DIC in charge and Associate Professor GSET, for vote of thanks. Namaste and good morning to all of you. It is my pleasure and privilege to propose vote of thanks on this great event. First and foremost, I would like to thank Honorable Education Minister Gujarat, Sri Bhupendra Singh Chudasama sir, and today's chief guest for sparing his valuable time and kind blessings. We are thankful to our Honorable Vice Chancellor Dr. Navin Seth sir for his kindness and blessings. I express my heartfelt gratitude My special thanks to Dr. Sanjay Chauhan sir, Director GIC, for his continuous support and motivations. I very much thankful to all BOG members for accepting our invitation and present here. I would like to thank Professor Raj, GIC team, IT team for their valuable contribution to make this event success. I would like to thank all distinguished participants for their actively participation. At last, I would like to thank Ministry of Education India for selecting GTU as a nodal center and providing the opportunity to host this great event. Thank you all. Thank you, sir. I request all to stand at your place for national anthem.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। I am very much thankful to Gujarat Technological University, our Honorable Education Minister Shri Bhupendra Singh Chudasama Sir ji. Now I am handing over the session to Central Ministry for the next function.